Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture, we will talk about the introduction to stats. Exactly, the topic is binomial probability distribution. This lecture will be delivered in English and in Urdu both. What is binomial probability distribution? Binomial probability distribution होता क्या है? It is used to calculate the probability of success or failure, right? It is already cleared in this slide, as you can see. Usually P is equal to probability of success, Q is equal to probability of failure. Usually we represent these values from success or failure. बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम सक्सेस और फेलियर को यूजुअली देखते हैं, और अगर सवाल हमारे पास आ जाए तो उसमें से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें सक्सेस और फेलियर की बात अगर हो रही है तो वो मेरे पास बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. नाउ एज यू कैन सी द क्वेश्चन 1 इज़ ऑलरेडी रिटन इन दिस फर्स्ट स्लाइड, एंड दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेशेंट रिकवर फ्रॉम अ डिजीज़ इज़ 0.4. This means that the patient will survive or not survive. So survive or not survive is related to success or failure, right? Yes. So 0.4 is recover, right? Recover means success. So it means that P is equal to 0.4. यानी कि मेरे पास ये बताया गया है कि पेशेंट ज़िंदा रहेगा या मर जाएगा, सर्वाइव होगा या नो सर्वाइव होगा. तो सर्वाइवल यानी कि सर्वाइव के लिए ऊपर जैसे बताया गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का मतलब होता है पी, तो इसी तरीके से पी मेरे पास 0.4 आ जाएगा. और उसके बाद बताया गया इफ़ 15 पेशेंट्स आर नोन टू हैव कॉन्टैक्टेड दिस डिजीज़, so it means that the total patients are 15, that is n is equal to 15, right? This is, I'm just going through the question and the answer is already written on the next slide, right? N is equal to 15. So what is the probability? Now the question arises from this, right? So moving to next slide. The question is exactly 5 survive. What does it mean? It means that the 5 will survive. So the data is P is equal to 0.4. The rest is Q. Q is equal to 0.6 because we know that P plus Q is equal to 1. If we will subtract 0.4 from 1, the answer will be 0.6. That is Q. But there is no use of Q. If you will not write here, then there will be no effect, right? यानी कि हमारे पास सवाल में है एग्जैक्टली 5 सर्वाइव, 5 सर्वाइव करेंगे, तो इसकी वजह से P मेरे पास है 0.4 और Q 0.6. इस तरीके से निकाला है कि भाई P प्लस Q इज़ इक्वल टू 1 है, तो 1 में से मैं 0.4 को माइनस करूँगा तो 0.6 आ जाएगा. ठीक है, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है. तो Q अगर ना भी लिखो तो भी कोई बात नहीं है. एंड N इज़ इक्वल टू 15 ऑलरेडी रिटन हियर. द सॉल्यूशन इज़ P. We want to calculate the probability of X, that is exactly 5. That's why I write here X is equal to 5. But in the table values, in the value table, as we just calculate the logarithms from the logarithmic table, same is the procedure for the probability. In the upper rows we have P values, while in the left side in the columns we are given X values, right? So but if I will see from the X is equal to 5, then this value will contain the values of 4, 3, 2, 1, 0. So what I need, if I will subtract the probability of X that is less than or equal to 5, it means that the exactly 5 or less than 5. If I will subtract from
the probability of x that is less than or equal to 5 from probability of x which is less than or equal to 4. Less than or equal to 4 means 4 3 2 1 0. These values will be subtracted from the value of x which is containing 5 4 3 2 1 0 because x is less than or equal to 5, right? So if I will write the value of this from the corresponding values of the table, 0.4032 in the next step, 0.4032 minus 0.2173, the value will obtain for the exactly x is equal to 5. उर्दू में ये है कि भाई प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5 मालूम करनी है, तो मैं क्या करूँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 5 है, इसको मैं माइनस कर दूँगा किससे भाई, क्योंकि अगर हम टेबल में भी देखते हैं, टेबल वैल्यूज़ में भी देखते हैं, तो उसमें हमारे पास जो 5 की सीट में 5 की बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड में अगर हम वैल्यू देखते हैं तो वो वैल्यू हमेशा से पिछली वाली वैल्यूज़ का सम अप होता है, ठीक है। यानी कि मैं अगर 5 की स्ट्रेट में देख रहा हूँ तो उसमें 4 3 2 1 0 वैल्यू को कैलकुलेट करके भी ये आंसर निकाला गया है। मतलब इस आंसर को निकालने में मेरे पास 5 4 3 2 1 0 सारी की सारी वैल्यूज़ गिवन है, तो उसमें से मैं क्या करूँगा, माइनस कर दूँगा। अगर 5 का निकालना है तो मुझे 4 3 2 1 0 को माइनस करना पड़ेगा ना, तो मैं क्या करूँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, इसको मैं माइनस करूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है। तो फिर उसके बाद जाहिर सी बात है एक्स 5 है तो 5 वाली वैल्यू लिखेंगे, 0.4032 को माइनस करेंगे 4 वाली वैल्यू से 0.2173, तो एग्जैक्टली 5 वाली की वैल्यू आ जाएगी। The next part is between 3 and 5 survive. So of course we have to calculate 3 4 and 5 values, so that's why I write here probability of x which is less than which is greater than or equal to 3 or less than or equal to 5, right? So if I will subtract the probability of x which is less than or equal to 5 from x which is less than or equal to 2, if I will subtract 5 from 2, the resultant will be 3 4 and 5. These values I really want to calculate because we have asked about to calculate the probability of 3 4 and 5, right? So I will write the values from the table, 0.4032 minus 0.0271, the result will be 0.3761. This is simple. In Urdu I will say between 3 and 5 का बताया गया ना, तो probability of 3 4 5 की मालूम करनी है। अगर मैं probability of x which is less than or equal to 5 लिखता हूँ तो इसमें 5 4 3 2 1 0 भी आ जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, इसमें से माइनस कर दूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, इसका मतलब 2 1 0 इसमें आ जाएगा, तो 2 1 0 ऑलरेडी माइनस हो जाएगा, तो बकाया बच जाएगा 3 4 5 का। तो मैं प्रोबेबिलिटी x 5 वाली जो 5 वैल्यू वाली है वो मैं लिखूँगा उसमें। यस मैं बात कर रहा था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो कि लेस देन और इक्वल टू 5 है उसकी वैल्यू जो मैं वैल्यू मैं टेबल से देखूंगा, x 5 के बराबर जो वैल्यू है उसको मैं लिखूंगा, 0.4032 को मैं माइनस करूंगा, जो x 2 वाली वैल्यू लिखी हुई है 0.0271 2 वाली वैल्यू लिखी हुई है, उसमें से मैं अगर माइनस इसको करता हूँ तो मेरे पास 0.3761 आंसर आ जाएगा। डेट्स इट। अब अगला जो सवाल है, द नेक्स्ट सी पार्ट इज़ लेस देन 3 सर्वाइव, इट मीन्स डैट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी विच इज़ x लेस देन 3, एंड यू कैन सी दैट लेस देन 3 आर द नंबर्स ऑफ 2 1 0. Yes, if I can also write probability of x which is less than or equal to 2, because less than or equal to 2 means 2 1 and 0, right? If I will write the value of x corresponding to 2, then I will obtain 0.0271. This value
is itself containing, because in the table about the corresponding values of x, which is 2, 3, 4, 5 and so on, exact, I will say, if I am talking about the x is equal to 2, it means that this 2 value is itself containing the value of 1 and 0, because the answers which is written in the front of these values, x is equal to 2, 3 and so on, so this value is actually containing the values of the back, means 2. If I'm talking about 2, it means this probability containing 1 and 0 also, राइट. सो दिस कॉन्सेप्ट आई वांट टू से. उर्दू में ये है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर लेस देन 3 मालूम करना है, तो भाई लेस देन 3 से मुराद है 2, 1, 0. तो मैं ये लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 2. लेस देन और इक्वल टू 2 का मतलब 2, 1, 0 आ जाएगा. तो एक्स इज इक्वल टू 2 की वैल्यू अगर मैं देखता हूँ टेबल से 0.0271 आ जाएगा आंसर. The D part is more than 12 survive. More than 12 survive means we have to calculate the probability greater than 12, means 13, 14, 50 and so on. So I don't know about the exact value of the maximum, right? So I know that sum of all the probability is equal to 1. So if I will subtract 1 from the probability of x less than or equal to 12, less than or equal to 12 means 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. If I will subtract this value from 1, the result will be obtained of the values greater than 12, that is 13, 14, 15, 16, 17 and so on, right? So this is the answer. उर्दू में है कि भाई मोर देन 12 का मतलब है कि भाई मैं एग्जैक्ट वैल्यू मुझे मैक्सिमम नहीं पता ना, तो मैं क्या करूँगा 1 सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 के बराबर होती, तो मैं 1 से माइनस कर दूंगा सीधा. किसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 12. लेस देन और इक्वल टू 12 का साइन है ना, इस स्लाइड में आप देख सकते हो. तो इससे मुराद है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 12 या 12 से कम वाले की. अगर मैं 12 या 12 से कम वाली प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दूंगा 1 से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.0003. उसके बाद अगले पार्ट में इन द नेक्स्ट पार्ट एटलीस्ट 10 सर्वाइव. क्लियर है भाई कि इसमें बताया गया है कि एटलीस्ट 10 सर्वाइव, इट मीन्स दैट वी हैव टू कैलकुलेट द मिनिमम 10 and the maximum from 10 onwards, right? Greater than 10, we can say greater than or equal to 10. That's why in this slide I have written that if we will subtract, same is the question as we have did in the D part, right? Sum of all the probability is equal to 1. If I will subtract 1 from the probability of the you can say x, which is less than or equal to 9, if I will subtract, the result would be obtained from 10 and onwards, right? This is simple. उर्दू में ये है कि भाई आप प्रोबेबिलिटी निकालनी ना एटलीस्ट 10 सर्वाइव. इसका मतलब है कि मिनिमम मेरे पास 10 दिया हुआ है, तो मैक्सिमम कितना होगा 10 से 11, 12, 13, 14 एंड सो ऑन. तो मैं यही करूँगा यहाँ पे कि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता मैक्सिमम कितना निकालना है, तो मुझे पता है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है और टोटल वैल्यू कितनी होती है प्रोबेबिलिटी की, वो थी 1. तो मैं 1 में से माइनस कर दूंगा 9 की वैल्यू को, 9 प्रोबेबिलिटी की, तो मेरे पास आंसर जो है वो 10 और 10 से ज़्यादा वाले का आ जाएगा. बहुत सिंपल है. इन द नेक्स्ट स्लाइड एफ पार्ट एट मोस्ट 5 सर्वाइव. एट मोस्ट and at most means that maximum is 5. So it means that if in short we can say that the value of x is less than or equal to 5. So the corresponding value of 5 in the values of the table is already shown, that is 0.4032. ये है कि हमारे पास यहाँ बताया गया कि मैक्सिमम 5 सर्वाइव है. तो मैक्सिमम 5 से मुराद क्या है कि हमारे पास बोला गया कि 5 मैक्सिमम है.
तो मतलब 5 से कम वाले का मैं कर सकता हूँ। और 5 की वैल्यू अगर मैं टेबल में देखता हूँ तो 5 से मुराद यही है कि x की वैल्यू मेरे पास 5 दी गई है, तो 5 और 5 से मिनिमम वाली जो भी होंगी वो तमाम की तमाम एटमोस्ट में ही आएंगी ना। एटमोस्ट से मुराद क्या, 5 मैक्सिमम है, मैक्सिमम 5 है, तो 5 वाली वैल्यू जो लिख दूंगा वो शुरू में बोलते हुए हैं कि 5 से मुराद है कि 5 4 3 2 1 0, वो सब का सब उसमें आ रहा है, तो मैं सीधा 5 की वैल्यू लिख दूंगा। इन तमाम क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस अगर होगी तो फिर काम बन सकता है। The next G part is fewer than 3 survive. Already it is very clear and it is related to the above parts that we did. That is x less than or equal to 2. That means we will see the value of 2 in the table and we will write just simply the answer. Same as the H part, which is no survive. No survive means x is equal to 0. The value of 0 we will write here simply. G और H पार्ट बहुत सिंपल है, इसमें क्या बोला गया है हमें कि फ्यूवर देन 3 सर्वाइव। फ्यूवर देन 3 सर्वाइव मतलब है कि 3 से कम। 3 से कम क्या होता है, 2 होता है, 2 1 0, तो वही लिख दिया x लेस देन 2। सेम, तो 2 वाली वैल्यू हम लिख देंगे। नो सर्वाइव का मतलब x इज इक्वल टू 0। This is a very simple, right? Now moving to the next question, which is question number 4. Question number 4 is a basketball player's batting average is 0.25. This is a batting average. So how can we say that this is the value of P and Q? So we will proceed further. What is the probability that he get exactly one hit? So it is related to success. Why? Because hit or no hit. Hit means success, no hit means no. No hit means failure. So here it is, they are talking about the hit which is success. That's why this is the value of P. तो हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई बेसबॉल प्लेयर्स की जो बैटिंग है उनका एवरेज है 0.250। अब मुझे कैसे पता चलेगा ये पी की है क्यू की है, क्योंकि आगे सवाल में दिया गया है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट एग्जैक्टली वन हिट। ये हिट का मतलब पता क्या होता है, हिट से मुराद है कि ये सक्सेस की बात कर रहा है कि शॉट लगेगी या शॉट नहीं लगेगी, हिट होगी या हिट नहीं होगी। सक्सेस से मुराद है हिट, फेलियर से मुराद है नो हिट, राइट। तो ये मेरे पास हिट का बोल रहे हैं, तो ये मेरे पास पी की वैल्यू होगी। नेक्स्ट 5 टाइम्स मतलब n इज इक्वल टू 5। So we have to calculate the probability which is x is equal to 1. So what we will do just simply x less than or equal to 1. If we will subtract one value from the 0 value, the result will be obtained of exactly one value, right?